लास्ट कुछ वीडियोस में बीपीएससी के साइंस के पीवाईक्यूज कर लिए थे, जो कि 1994 से 66 बीपीएससी तक हम लोग कर चुके हैं। 1994 से हम लोग ने 2020 तक किया है, ठीक है, जो कि है 66 बीपीएससी तक। तो आज हम करेंगे 67, 68 एंड 69 बीपीएससी में जो भी साइंस के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सब अपना आंसर दीजिएगा। और ये मैं करवा रही हूँ परम आईएएस से, उसका पीडीएफ है साइंस का पीवाईक्यू। तो इसमें आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं ना, तो ऐसे हम ढक के करने वाले हैं जिसमें आंसर आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। 69th बीपीएससी में पूछा गया है, कौन सा टेस्ट टंग का नहीं है। स्वीट, बिटर, साल्टी, स्पाइसी, उमामी, सॉर, पंजेंट। तो आंसर विल बी 4 and 7। स्पाइसी एंड उमामी नहीं है। अब देखते हैं सही है या नहीं। 4 and 7 सही है। The traditional 5 basic tastes such as sweet, sour, salty, bitter, and umami have been part of our understanding of taste for years. However, recent scientific research have unveiled the evidence of sixth basic taste sensation. अब बताइए इसमें which of the following pair are which of the following pairs are correctly matched? एनोरेक्सिया स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया ईटिंग डिसऑर्डर है, डिस्पोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, या इंसोम्निया पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल है। बताइए कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। बताइए आंसर बताइए आप। आंसर विल बी सी 3 and 4। डिस्पोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और 4 इज एनसोमनिया पार्शियल और फुल लॉस ऑफ एनोस्मिया। इंसोम्निया तो इंसोम्निया ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, और स्लीप डिसऑर्डर है। तो देखिए एनोरेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर है, डिस्पोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इंसोमिया एसोसिएटेड विथ पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है। द यूनिवर्स इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सार्स। 69th बीपीएससी में पूछा गया है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है। आप तो देख पा रहे हैं ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं ये वाला। तो ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार विच रोटेट ऑन द axis on their axis. The rotation create the pulses. They may or may not be created by the supernovas. In the context of lab grown diamonds LGDS, what is used as diamond seed? White sapphire, moissanite, graphite और cubic छिलका। graphite। क्या चाहती है जनता, जैसे ये सही है या जैसे हम डेली करते थे वैसे करने का? मुझे नहीं लग रहा है ऐसे में मज़ा आ रहा है लोगों को। पूछो क्वेश्चन और आप लोग आंसर दोगे, वो सही रहता है या ये सही है?
बताओ जल्दी, टेल मी फास्ट। कोई एक भी कमेंट कर दो, जैसे पहले करते थे वो सही है या ये स्क्रीन कास्ट करके करना सही है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज होता है? तो वो कैल्वर होता है। कैल्वर इज अ पॉलीमर ऑफ पी पेंटा यूजेस ऑफ नाइलॉन। क्लोथिंग में होता है, इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इट इज ट्विड क्या होता है? ट्विड इज अ रफ वुलन फैब्रिक ऑफ सॉफ्ट ओपन फ्लेक्सिबल टेक्सचर resembling cheviot on one but more closely. It usually woven with the plain woven. HMX का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX octogen is an acronym of high melting explosive. It is also known as octagen and cyto cyclotetramethylene tetranitramine, as well as by other names. It is colorless solid that dissolves slightly in water. HMX जो 69th में पूछा गया वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और ये ऑक्टोजन है। What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022? उस समय का ये एक तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो वो था ऑप्टिमस। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क। रिलीज्ड एन एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड robot Optimus engaging in various activities in October 2022. What is the Manhattan Project? A research and development undertaking that produced the first nuclear weapon. The Manhattan Project has a top secret research and development undertaking by USA to make atomic bomb during World War II. मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग था बाय यूएसए, अमेरिका द्वारा एटॉमिक बम बनाने के लिए। कौन सा? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड of the same size as that of the object. The position of the object should be, तो पोजीशन क्या होना चाहिए? जो इमेज है कॉनकेव मिरर से बनाया वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। मीन्स रियल और इन्वर्टेड उल्टा होगा, और सेम साइज का होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज है, और इमेज साइज इक्वल हो गया। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी व्हाट? तो एट द फोकस, at the center of the curvature, beyond the center of curvature, between the focus and the center of curvature. तो आंसर will be at the center of curvature। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर के, तब इमेज रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, और साइज भी सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज साइज का। अब देखिए ये जो चार्ट है, अगर ये हम पढ़ लेंगे
तो इससे जो भी मिरर और मिरर के क्वेश्चंस आएंगे वो तो हमें आ जाएंगे। तो चलिए चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए जूम कर देती हूँ ये चार्ट को, ठीक है। देखिए भाई, ओके सॉरी, ये आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर है तो कोई थम्स अप कर दो, क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप। ओके ठीक है। एट इन्फिनिटी, मेरी आर्मी जुड़ी है या नहीं? कोई मेरी आर्मी से जुड़ा है तो हाय बोल दो भाई। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है बहुत दूर कहीं, तो पोजीशन क्या होगा इमेज का, वो फोकस पे बनेगा। और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और छोटू सा बनेगा, डिमिनिस्ड होगा। मान लो बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो उसका इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा और वो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, पर वो छोटू सा डिमिनिश साइज रहेगा। यूज क्या होता है, एज कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस। इसका क्या यूज करते हैं, कलेक्टर की तरह यूज करते हैं सोलर हीटिंग डिवाइसेस पे। कलेक्टर ऑफ व्हाट, रेडिएशन। कहाँ से, सूर्य की जो रेडिएशन आती है सोलर एनर्जी की, उसके लिए सोलर हीटिंग डिवाइसेस में एज अ कलेक्टर ऑफ रेडिएशन ये यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड, तो जो इमेज बनेगी वो बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। वो भी रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी एंड डिमिनिश रहेगी, लाइक द अबव, ठीक है। क्या इन्फिनिटी पे था तब भी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड बन रहा था, और अब अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तब वो बस फर्क ये आ जाएगा कि पहले फोकस पे बन रहा था, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और उसका जो नेचर और साइज ऑफ द इमेज रहेगा वो सेम रहेगा, लाइक रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और वो रहेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा एंड सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट। यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज रहेगा। और ये यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर बिहाइंड अ प्रोजेक्टर लैम्प। प्रोजेक्टर लैम्प के पीछे जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है उसमें ये यूज किया जाता है। चलिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, लाइक सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो जो इमेज बनेगी हमारी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ठीक है। और नेचर उसका रहेगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बड़ा, जो उसका साइज रहेगा उससे बड़ा बनेगा। तो इन फ्लड लाइट्स ये यूज होता है, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हमने रखा है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट इन्फिनिटी। आप एक चीज समझ पा रहे हो क्या, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बन रहा था, अगर अब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और जब हमने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारा बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इमेज बन रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो आपको हमेशा याद रखना है कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, और वो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा एंड मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है। उसमें क्या हो जा रहा था कि वो डिमिनिस्ड हो रहा था, इसमें रियल भी रहेगा, इन्वर्टेड भी रहेगा, पर बड़ा रहेगा, इनलार्ज्ड रहेगा। और ये यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर इन कार हेडलाइट, सर्च लाइट एक्सेट्रा। अब अगर हमने बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, तो बिहाइंड द मिरर उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। और ये वर्चुअल होगा,
इरेक्ट होगा एंड मैग्नीफाइड होगा, ये इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल नहीं होगा, लेकिन सीधा होगा और बड़ा होगा। और ये यूज होता है एज अ सेविंग मिरर और मेकअप मिरर एंड डेंटिस्ट मिरर। कहाँ कहाँ? सेव करने के टाइम, मेकअप करने के टाइम, और जो हमारे डेंटिस्ट दांत देखने के लिए यूज करते हैं उसमें। ठीक है। A photoelectric cell is a device which converts light energy into electrical energy, converts electrical energy into light energy, solar stores light energy, none of the above. A photoelectric cell is a device which converts light energy into electrical energy. नाम भी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। A photoelectrical electric cell such as solar cell or photo transistor converts light energy into electrical energy. Name of the apparatus or transformation of energy. बाकी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं पहले ही। डायनेमो, ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करता है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में करता है। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, हीट भी होती है ना, लाइट भी आती है, हीट भी होती है। वो कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब? आप एक तरह से समझो, वो टंजेंस्ट वाला, जो टंजेंस्टन वाला था ना, लाल वाला, वो देखते थे लाइट भी देती थी, पर बहुत बहुत गर्म भी हो जाता था, चाहे हीलियम वाला हो या वो हो। इलेक्ट्रिक सेल क्या? केमिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल देखा आपने, केमिकल्स रहते हैं उसके अंदर, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैंडल क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। कैंडल्स भी एक तरह से वैक्स है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स है, केमिकल फॉर्मूला ही तो होता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हर एक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ सेम फिर तो केमिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट एनर्जी होती है। और सितार कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। हम क्या करते हैं? सितार के स्ट्रिंग्स को इधर उधर करते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी उसमें दे रहे हैं, पर वहाँ से हमें साउंड मिलता है, तो साउंड एनर्जी हो गया। तो डायनोमो में क्या था कि हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया है जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते तब वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में होता है। सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल, सोलर सेल करता है। ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब electrical energy into heat and light energy. Electric cell chemical into electric energy. Candle chemical energy into heat and light energy. सितार क्या करता है? conversion of mechanical energy into sound energy. The amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution solvent is known as what in chemistry? तो ये होता है concentration of solution. The amount of solute present per unit volume or per unit mass of a solution solvent is the concentration of a solution. SI unit is moles per cubic meter. The number of moles of solute equal to mass of solute in gram mole mass of solute. How do COVID vaccine stimulates an immune response? So by introducing live attenuated SARS-CoV-2 virus, immune response can be stimulated in the host by introducing live attenuated pathogens, i.e. SARS-CoV-2 virus. Option B and option D are not associated with the mechanism of stimulating immune response by COVID vaccines. The statement made in option C is unscientific. सी में क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस में
WHO recommended two main types of SARS-CoV-2 vaccine: one mRNA vaccine and two vector vaccine. Recently, Novavax, include Maryland, USA, has made COVID vaccine using spike protein of Omicron variant XBVV 1.5, and recently has granted its emergency use authorization to the people of age of 12 and above who has not received their updated mRNA vaccines on 3rd October 2023. Nevertheless, the introduction of adjuvanted spike protein can't be considered as harmless spice since it is the main component of the virus through which it's entered the host and spread the infection. Which of the following liquids is a bad conductor of electricity? Salted water, lemon juice, orange juice, or none of the above? The none of the above. सब conductor होगा. A salt water is completely ionized water, hence it is a good conductor of electricity. Orange and lemon juice contain a various salt and acid and therefore good conductor of electricity. D is the only option for a bad conductor, none of the above. Okay. The DNA double helix structure was discovered by James Watson and Francis Crick. James Watson and Francis Crick received Nobel Prize in 1943 for their model of DNA double helix structure. Two objects of different masses falling freely near the surface of the moon would have same velocity at any instant. यहाँ बोला जा रहा है दो डिफरेंट मास का ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है द सरफेस ऑफ द मून near the surface of the moon would be क्या would moon would have क्या सेम वेलोसिटी होगा एट एनी डिस्टेंस. ठीक है, ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी पैरामीटर्स हमारे हाइट और टाइम के लिए नहीं दिया है. एज्यूमिंग दैट बोथ द ऑब्जेक्ट आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों एक ही टाइम पे ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द सेम रीजनेबल हाइट, एक जैसे हाइट पे, दे विल हैव the same velocity at any instant as they fall freely near the surface of the moon. How do vector vaccines work to provide immunity? By introducing a weakened or inactivated virus into the body by directly attacking the destroying. How do vector vaccine कैसे वर्क करता है इम्यूनिटी देने के लिए? तो ये करता है by placing the virus in a modified version of a different virus. Vector vaccine refers to an introduction of viral gene into a harmless virus, adenovirus, i.e. modified version of another virus, which is then introduced in the host body to stimulate immune response. Hence, option C is correct. Option A and B are not related to the vector vaccine. Option D is one of the principle of vaccines against SARS-CoV-2. No vector was used in this technology. What is expanded from the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? 69th BPSC. Messenger ribonucleic acid. Messenger RNA. mRNA is messenger RNA. M stand for messenger. mRNA stand for messenger ribonucleic acid and is single strand molecule that carries the instruction to make proteins. During pandemic, mRNA is detected by RT-PCR for diagnosis of disease. And AC current can be produced by डायनेमो. एसी करंट डायनेमो से प्रोड्यूस हो सकता है इनमें से. एंड एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डायनेमो विच इज कॉल्ड एसी डायनेमो और अल्टरनेट
This is done by rotating a coil or armature within the magnetic field created by field coil. If a DC current is required, it can be supplied by commutator in a DC dynamo. AC जनरेटर DC जनरेटर दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं. AC generator is a mechanical device which converts mechanical energy into AC electrical power. DC generator is a mechanical device which converts mechanical energy into DC electrical power. इसमें कुछ नहीं. AC जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल डिवाइस है, दोनों ही मैकेनिकल डिवाइस हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं. फ़र्क इतना है कि एसी इलेक्ट्रिकल पावर देता है और डीसी इलेक्ट्रिकल पावर देता है. इन एसी जनरेटर द इलेक्ट्रिकल करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली. एसी जनरेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करते रहता है, उल्टा. इन डीसी जनरेटर द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. इन एन एसी जनरेटर द कॉइल through which the current flows is fixed while the magnet moves. The construction is simple and costs are less. In a DC generator, the coil through which the current flows rotates in a fixed field. The overall design is very simple, but construction is complex due commutators and slip rings. AC generator does not have commutators. DC generator have commutators to make the current flow in one direction only. AC जनरेटर में कम्यूटेटर्स नहीं होता, पर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर्स होता है, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट होता है जो कि वन डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, पर वो तो रिवर्स भी करता है ना. AC generators have slip rings. DC generator has split rings commutators. Current density is a vector quantity. Before thinking about the question, we will understand the concept of vector and scalar quantity. A quantity that has magnitude as well as direction is known as vector quantity, but it does not have a position. It is represented by an arrow. Some example of vector quantity are velocity and force, and other side a quantity that has only magnitude, no direction is known as scalar quantity. Some example of quantity are mass and speed. Now we will understand the current and current density. Current is produced when electric charge flows in a direction. Its unit is ampere. The current is a scalar quantity. Now we will be able to understand the concept of current density. The amount of current flowing in per unit area is known as the current density. It is the ratio of the amount of current flowing and the area of current flowing. The current density is represented as Janland as its unit is ampere per meter square. Current density is a vector quantity because it's a product of charge density and velocity. Here charge density is a scalar quantity and vector velocity is a vector quantity, which makes current density also a vector quantity. What is the basis of most useful classification of medications in medical chemistry? So molecular targets.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? तो इसमें कैटलिस्ट प्रोमोटर है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट तो बढ़ाता है, इसमें स्लो डाउन बोल रहा है, तो नन ऑफ द अबव होगा। होमोजेनियस कैटलिस्ट बिकॉज अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बूस्ट द रेस्ट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट चेंज केमिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस। The reactant and catalyst are in the same phase in homogeneous catalyst, liquid or gas. The activity of catalyst is reduced by the promoter. The correct answer should be B, but BPSC consider D as the correct option. Homogeneous catalyst. इसमें बोल रहे हैं homogeneous catalyst because a catalyst is suitable as a substance that boosts the rate of a reaction. The input and output nerve meet at central nervous system. The central nervous system has four parts, namely brain, spinal cord, nerves, and neurons. The input and output nerves meet at the several places, particularly in spinal cord. They do not meet in the liver or the heart as they do not form part of nervous system. स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मिलते हैं, तो ऑप्शन में सीएनएस है तो सीएनएस देंगे, हार्ट और लिवर में नहीं आता है कुछ। Large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20. 29 में 22 क्वेश्चन आया था, अब 69th में 22 क्वेश्चन हैं। अब 68 क्वेश्चन 68 बीपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं। Large number of thin strips of black paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be convex lens का पूछ रहा है, white horse। देखिए इसमें क्या होगा, अजेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, ये तो गलत हो जाएगा ना। A horse of less brightness. An image of white horse is captured by a convex lens since the light falling on the curved portion would react at the picture point. The white horse entire image is produced, but its intensity is reduced. A horse of less brightness is produced by the lens. Convex lens. The convex lens is relatively thick in the center and thin at the lower and higher border. It converges light rays that travel parallel to its principal axis. Instead of curving inside, the edges are curved outwards. Concave lens. A concave lens has thicker edges and a thinner center. It is one that bends a straight line beam away from the sources and focuses it onto a distorted, upright virtual image. Shrillness of sound is determined by amplitude of sound, wavelength of sound, velocity of sound, or more than one of the above. The shrillness of sound is um, determined by wavelength of sound. It is true that shrillness of sound is determined by its frequency, but frequency and wavelength are inversely proportional. So
It is also true to say that stillness of sound depends on its wavelength, since frequency and wavelength are inseparably interlinked. Velocity equal to wavelength into frequency, and velocity is constant in a medium. The correct answer is B, wavelength of the sound. The amplitude of the sound determines the loudness of a sound. The larger the amplitude, the louder the sound. The velocity of the sound refers to the speed at which sound waves propagate through a particular medium such as air, water, or solids. The velocity of sound can vary depending on the properties of the medium, such as its density, temperature, and elasticity. Which of the following photoelectric device is most suitable for digital applications? Photoelectric cell, photoemitter, photodiode, more than one of the above. The cell, photovoltaic cells, or commonly known as solar cell, have vast use in digital technology. For example, entire satellite communication depends on it, since this is the main source of power for it. The photodiode is a PN junction diode that consumes light energy to produce an electric current. They are also called photodetector, a light detector, and a photosensor. Photodiodes are designed to work in reverse bias condition. Typical photodiode material are silicon, germanium, and indium gallium arsenide. The symbol of photodiode is similar to that of an LED, but here the arrow points inward. Ball bearings are used to convert static friction into drag, sliding, rolling, more than one of the above. तो C होगा आंसर, rolling. Ball bearings are used to convert static friction into rolling. Ball bearings are used to convert static friction into rolling friction. Ball bearings convert static friction into lowering friction. They consist of small metal balls housed within a ring or raceway. The rolling motion of the metal balls reduces resistance and minimizes friction. This allows for smoother movement, reduces wear and tear, and improved efficiency in mechanical systems. Rolling friction example, rolling friction is one of the types of kinetic and dynamic friction which comes into force when one body rolls over the other. For example, when a circular disc, a wheel, a ring, or a sphere rolls over the surface, a force that opposes its motion is the rolling friction. Other examples are a basketball rolling on the court comes to rest after some time. A tire rolling on the road, skateboard wheels rolling on this road are all examples of rolling friction. The shape, size, and weight are the factors that affect the motion of the vehicle. For example, a 20-wheeler heavy loaded truck will have higher rolling friction than that of Tata Nano car. Painting the wall using paint roller. Static friction example. स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल है स्टैटिक फ्रिक्शन act on two bodies in contact, one body over the other. Let us consider a few real life examples. While walking, our feet backward motion exert pressure on the road as the other foot goes forward. Static friction generates when two fabrics slides over each other. Sliding friction example. When an object slides over the other, an opposing forces that comes into play is the sliding friction. Illustrative sliding friction example are as follows. Pushing a lawn roller on the grass, rubbing one's hand together causes heat because of the sliding friction. Opening a sliding door window, dragging mouse on the surface, sliding chalk to make art on the floor, speed car racing. Fluid friction example. While swimming, a swimmer experiences an opposing force. This force is the fluid friction force. While sucking a
drink through a straw, you experience some friction. That friction is fluid friction. During skydiving, a parachute slows down because of their air resistance. Flying a paper made an aeroplane. Flying a paper made an aeroplane. A goalkeeper is a game of football pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to decrease the rate of change of momentum. After holding the ball, goalkeeper pull his hand backward to slow down the rate of change of momentum while increasing the time. The force is directly related to the rate of change of momentum. This allows less force to be exerted on his hand if he moves his hand backward. According to the Newton's second law, the rate of change of momentum of a body is equal to the force applied to the body. We know that force is equal to the rate of change of momentum when a moving ball is caught by the goalkeeper. Ultimately, it stops. It means the change in the momentum of the ball will be same whether he catches the ball directly or by moving his hand backward. By moving his hand backward during the catch, he gives more time to change the momentum of the ball. This process ensures minimum acceleration, hence, the force will be minimum by the goalkeeper on the ball. The law of action's reaction says that the force on a goalkeeper by the ball will also be minimum. Which among the following is a positively charged particle emitted by radioactive element? Beta ray, अल्फा रे, कैथोड रे, कौन सा है? तो अल्फा रे are positively charged particle. Alpha particle is highly active and energetic helium atom that contains two neutrons and protons. These particles have the minimum penetration power and highest ionization power. They can cause serious damage if get into the body due to their high ionization power. They are capable of ionizing numerous atoms by a short substances. It is due to the fact that the radioactive substance that release alpha particle are required to be handled after wearing rubber gloves. Property penetrating power. अल्फा रेज का लो पेनिट्रेटिंग पावर है इवन स्टॉप्ड बाय अ थिक पेपर. Beta ray penetrating power is greater than alpha ray. They can penetrate through a thin metal foil. Gamma ray have very high penetrating power greater than beta rays. They can penetrate through thick metal blocks. Effect of an electric and magnetic field. अल्फा हमने क्या समझा? पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम अल्फा का है और सबसे ज़्यादा गामा का है. बीटा का अल्फा से ज़्यादा है, गामा से कम है. अल्फा का इतना कम है कि वो एक पेपर जो मोटा पेपर होता है वो भी रोक देगा उसको. और ये जो बीटा रे है वो थिन मेटल फॉइल को भी कर सकता है और गामा रे एक मेटल ब्लॉक थिक मेटल ब्लॉक को भी पार कर सकता है. Effect of an electric and magnetic field. Alpha rays were deflected by both the fields in accordance with Fleming's left hand rule. और बीटा रे का है deflected by both the fields but the direction of the reflection is opposite to that of for alpha rays in accordance with Fleming's left hand rule. They are not reflected by both the fields. गामा रेस कोई भी रेस से नहीं रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कोई भी फील्ड में नहीं होता है. स्पीड. अल्फा रे का स्पीड 1/10 to 1/20 है टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के. बीटा रे का है देयर स्पीड कैन गो अप टू 9/10 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट. और गामा रेज है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है.
Centripetal force is responsible for centripetal force is responsible to keep the body moving along a circular path. सही है. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर मोशन में होता है, ये पता है आपको. तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन वैसे हैं नहीं. और सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है जो कि हमारा अंदर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ ऐसे समझिए, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ, फ्यूगल भाग भाग करके वैसे बाहर की तरफ जो लगता है. तो सेंट्रीपिटल हमारे जो भी मूविंग बॉडी होती है उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए लगती है. Centripetal force is force acting on an object in a curvilinear motion directed towards the rotation on center of curvature. When an object which moves in circular path experiences a for acting radially towards inwards called centripetal force, the force is directed towards the rotational axis. Which of the following energy changes involve frictional force? Potential energy to sound energy, chemical energy to heat energy, kinetic energy to heat energy. फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा एनर्जी के चेंज में फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा? ये होगा आपका काइनेटिक टू हीट एनर्जी में. आंसर इज सी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी often involves frictional force. When objects rub or slide against each other, the friction between their surface converts some of the kinetic energy into heat energy. This energy transformation occurs in various situations such as rubbing your hand together when the kinetic energy of your hands is converted into heat energy due to friction. Similarly, when a vehicle moves on the road, the friction between the tire and road surface causes some of the kinetic energy of the vehicle to be converted into heat energy. अब देखिए, हमने आगे भी पढ़ा था कि डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल. माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल टू साउंड. सोलर सेल सोलर टू इलेक्ट्रिकल. ट्यूबलाइट electrical to light. Electric bulb light to electric to heat and light. Electric cell chemical to electric energy. Candle chemical to light and heat energy. Sitar is mechanical to sound energy. A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn into the right side suddenly. The passenger sitting in the bus bill. एक बस सीधी लाइन में चल रही है पर अचानक वो राइट साइड सडनली एक शार्प टर्न लेती है दाएं की तरफ. तो जो अंदर के पेशेंट बोल रहे अंदर के जो पैसेंजर होंगे वो क्या होगा, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे गिरेंगे. बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड, मूव मोर देन वन ऑफ द, क्या तो क्या होगा, वो लेफ्ट के साइड में बेंट हो जाएंगे. राइट मारा ना सडनली उसने, तो वो बेंट हो जाएंगे उल्टे साइड बाएं की तरफ. A bus is moving along a straight path and take a sharp turn the right side suddenly. The passenger sitting on the bus will bend towards the left side. The lower portion of the passenger closest to the bus tend to go in the direction of the sharp turn because of centripetal force, but the upper portion of the passenger throws an outside centrifugal force. This is happening due to the two forces that are acting at the time, centripetal and centrifugal forces. Before, before playing the orchestra in musical concert, a sitarist tried to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, she is adjusting what? Amplitude of sound, intensity of sound, frequency of the sitar string with the frequency of other musical instrument. D is more than one of the above. The answer होगा when a string is plucked, it vibrates, producing sound. The frequency of the star string with the frequency of other musical string.
वो एडजस्ट क्या कर रहा है सितार के फ्रीक्वेंसी को विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग बाकी के अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो when a string is plugged, it vibrates, producing sound wave. The pitch or frequency of the sound produced is directly related to the frequency of vibration of the strings. Higher tension in the string results in higher frequency of vibration and a higher pitch, while lower tension produces a lower frequency and lower pitch. In an orchestra, different musical instruments play different pitches. To achieve harmony and coordination among the instruments, their frequencies need to be matched. The sitarist adjusts the tension of the sitar string to align its frequency with frequencies of the other instrument being played. This adjustment ensures that the sitar's sound blend well with the overall sound produced by the orchestra, resulting in a harmonious and coordinated musical performance. Detect the odd ones. Setting of cement, burning of coal, ripening of fruit. None of this. All are, I think, all are केमिकल रिएक्शन और इनमें से ऑड ऑन वन आउट पूछा तो कोई ऐसा नहीं है, सब केमिकल रिएक्शन है। Water and cement initially form a cement paste. This bring to react the and hardens and set. This paste binds This paste winds the aggregate particles through the chemical process of hydration. In the hydration of cement, chemical changes occur slowly, eventually creating new crystalline product. Heat evolution and other measurable signs. Setting of cement is an example of permanent change which is irreversible, hence is not a physical change. Ripening of fruit is a chemical change. When the fruit gets ripe, the pigment present in the fruit skin gets changed and this process cannot be reversed. The burning of coal is a chemical change. When the coal gets burnt, the carbon present in the coal gets converted into carbon dioxide gases. The burning of coal is an irreversible process. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के। तो बर्निंग इन अ केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या होता है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस होता है जो दूसरा सब्सटेंस बना लेता है। तो बर्निंग ऑफ वुड भी केमिकल चेंज है। रॉटिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक इज केमिकल चेंज। रस्टिंग मेटल इज केमिकल चेंज। यूजिंग अ बैटरी इज केमिकल चेंज। Digestion is chemical change. Souring of milk is chemical change. Exploding fireworks is chemical change. अंडा बनाना is chemical change like cooking an egg. Photosynthesis एक chemical change है। Physical change क्या है? क्रशिंग कैन फिजिकल चेंज है, उसको दोबारा से ऐसे करोगे ना तो वो वापस से वैसा हो जाएगा। मेल्टिंग एन आइस क्यूब अगर मेल्ट हो रहा है तो उसको वापस से फ्रीज करोगे तो वापस से आइस क्यूब बन जाएगा। बॉइलिंग वाटर भी एक तरह से फिजिकल चेंज है, उसको फिर से ठंडा कर सकते हैं, ठंडा को गर्म कर सकते हैं, कंडेंसेशन हो सकता है। फिर से मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, पानी और मिट्टी को रेत और मिट्टी पानी को मिलाना, फिर सुखा भी तो सकते हैं। ब्रेकिंग ग्लास इज फिजिकल चेंजेस। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज फिजिकल चेंज। उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बाहर फिर से ले आएंगे। शिडरिंग पेपर, चॉपिंग वुड फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल, लाल और ग्रीन मार्बल को मिक्स करना, फिर चुन भी तो लेंगे तो वापस से हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ एन ड्राई आइस। A form of matter has no fixed shape but it has fixed volume. An example of this form of matter is krypton, kerosene, carbon, steel, more than one of the above. तो ये किसकी बात कर रहा है? ये फॉर्म ऑफ मैटर है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये तो लिक्विड की बात कर रहा है। तो देखिए लिक्विड कौन सा है इसमें? लिक्विड तो केरोसिन है तो केरोसिन हो जाएगा।
Krypton is a gas and kerosene is liquid. While both don't have fixed form, गैस और लिक्विड दोनों के फिक्स फॉर्म नहीं होते हैं, पर लिक्विड का होता है ना फिक्स वॉल्यूम. It is kerosene whose volume cannot be changed significantly with pressure temperature, whereas krypton being a gas, its volume can be changed drastically with change of pressure and temperature. So it is kerosene along which has no fixed form but fixed volume. So the answer will be B. Which gas contributes which gas contributes to global warming through its greenhouse effect? कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग करता है अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण? तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. मोर देन वन ऑफ द अबव होगा ना. ग्रीन हाउस गैस तो तीनों ही हैं. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिनन वेयर सर्टेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट from the sun and warm the planet. These gases are known as greenhouse gas and include uh, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, fluorinated gas और water vapor. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, फ्लोरिनेटेड गैसेस में आ गया. Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxide. The example of amphoteric oxides are कुछ मेटल्स और ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ, क्या? नमक और पानी बनाने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर. दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है. और कुछ एग्जांपल्स हैं Al2O3 एंड JnO. यही है इसका एग्जांपल. बोथ Al2 and O3 और अल्मोनियम ऑक्साइड एंड zinc oxide are example of amphoteric oxide. They can react with both acid and base to form salt and water, exhibiting their amphoteric nature. When these oxides react with acids such as hydrochloric acid, they form salt, ammonium chloride, zinc chloride, and water. Similarly, when reacted with bases like sodium hydroxide, they yield salt. Example sodium aluminate and sodium zincate and water. Acids react with metal carbonate to liberate which gas? तो एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. Acid reaction with metal carbonates. Acid react with metal carbonates to liberate carbon dioxide gas. The reaction occurs because the hydrogen ions form. The acid reacts with the metal ion and the in the carbonate and to form water. The carbonate ion react with the hydrogen ion to form carbon dioxide. The balanced chemical equation for this reaction can be written as metal carbonate plus acid, salt plus carbon dioxide plus water. The carbonate ion react with the hydrogen ion to produce carbon dioxide gas and water. This reaction is exothermic. It releases heat energy and is a classical example of acid-base reaction. The amount of carbon dioxide produced is proportional to the amount of acid used in the reaction. It can be measured by collecting a gas produced and weighing it. Carbon monoxide gas. This option is incorrect. Carbon monoxide is typically produced from incomplete combustion of carbon containing material H2 hydrogen gas and substance is incorrect. Which acid described as HOOCOOH? इथानोइक एसिड होगा ये तो. ओके. C2O4H2. C2H2O4. Oxalic acid. Oxalic acid is a dicarboxylic acid with a chemical formula of C2H2O4. It is also known as ethanoic acid or oxalic acid. This organic compound is found in many vegetables and plants. It is the simplest dicarboxylic acid with condensed formulas HOOCCOOH and has an acidic strength greater than the acetic acid.
Acetic acid, simultaneously named ethanoic acid, is an acidic, colorless liquid and organic compound with the chemical formula CH3COOH. Vinegar is at least 4% acetic acid by volume, making acetic acid the main component of vinegar apart from water. Carbonic acid is a chemical compound with the chemical formula of H2CO3. The molecule rapidly converts into water. The carbon dioxide in the presence of water, however, is the in the absence of water, it is quite stable at room temperature. The odor of acetic acid resembles that of acetic acid. टोमेटो kerosene vinegar की तरह होगा और क्या. The odor, answer is vinegar. The odor of acetic acid closely resembles that of vinegar. This is because acetic acid is the main component of vinegar and its characteristic smell is what gives vinegar its distinct aroma. The sour, pungent, and slightly sweet scent of vinegar is primarily due to the presence of acetic acid. Uses of acetic acid. Ethanoic acid is used in the manufacturing of various dyes, plastic, rayon, silk, and perfume. It is most usually simply used as a table vinegar. In medicines, it is used as a local irritant. In rubber, in the rubber industry, it is used as a coagulating agent. It is useful in manufacturing of acetate, acetone, and ester used in various industries. It is widely used in the production of vinyl acetate monomer. In the treatment of cancer, it is directly injected into the tumor. Acetic acid has desirable solvent properties along with the ability to form miscible mixtures with both polar and non-polar compounds. Hence, it is a very important industrial solvent. It is widely used in the industrial preparation of dimethyl tetraphthalate DMT. It is an active bactericidal disinfectant that is also effective against most other bacteria. You have been provided with three test tubes. One of them contains distilled water and other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. Which of them will turn red litmus to blue? रेड लिटमस को ब्लू कौन सा करेगा? You have been provided with three test tubes. One of them contains distilled water and other two contain acidic solution and a basic solution respectively. They will turn red litmus to base. Acid can be defined in many ways, but generally their aqueous solution have the following properties. They are sour in taste. They turn blue litmus red. They react with certain metal and liberate hydrogen gas. They react di with oxide and hydroxides of metals forming salt and water. Their aqueous solution conduct electricity. Base are defined in various ways, but generally substances having the following properties are called bases. They have bitter taste. Their aqueous solution have a soapy touch. They turn red litmus blue. Red को blue कर देगा base और एसिड करेगा ब्लू को रेड. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म salt and water. Their aqueous solution conduct electricity. Definition donate प्रोटॉन H प्लस आयन. एसिड क्या करता है? डोनेट करता है H प्लस आयन और बेस क्या करता है? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है और डोनेट करता है. डोनेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. pH ऑन द स्केल लेस देन 7 होगा एसिड का. लो pH इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर एसिड. ग्रेटर देन 7 होता है pH. हायर pH इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर बेस.
Ion formation. Produced hydrogen ion H plus ion when dissolved in water produce hydroxide ion OH minus when dissolved in water. Taste sour, bitter. एसिड्स का sour होगा, टेस्ट और बेसिस का bitter होगा. Feel on skin. Can be corrosive and may cause a burning sensation. एसिड को जला सकता है हाथ को, और बेस जो होता है स्लिपरी और सोपी फीलिंग देगा. एग्जांपल्स आर HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का, और इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. डिस्टिल्ड वाटर is neutral and has pH 7. It does not significantly affect the color of litmus paper. और ये लिटमस पेपर को कलर को अफेक्ट नहीं करता है. Why does dry HCl does not change the color of dry litmus paper? Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Because no H3O plus ions are present. Litmus change color only since of H3O plus ions. Dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because no H3O plus ions are present. Litmus changes only in the presence of H3O plus ions. Dry HCl is not able to dissociate to give hydrogen ions. Acid like HCl is only able to dissociate only in an aqueous medium. HCl is not aqueous and not the litmus paper is wet. Thus, there is no change in the color of the litmus paper. Why does digest litmus paper? Which of the following statement about diamond and graphite is true? They have same crystal structure. They have the same degree of hardness. They have the same electrical conductivity. None of the above. Diamond and graphite both are known as allotrope of carbon, but neither their crystalline structure nor their hardness and are same. Carbon other in diamond form three-dimensional tetrahedral rings in a plane. Diamond is one of the hardest material while graphite is very soft. Similarly, diamond is poor conductor of electricity while graphite is used in manufacture of electrodes of carbon employed in the electric cells as it is an excellent conductor of electricity. Hence, none of the answer is correct. सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं है. जैसे कि आप जानते हो कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्डेस्ट होता है, और डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द amount of water in the cells. Stomata opens and closes in a process that regulates gas exchanges and water balance in the plant. The process is controlled by two main cells called the guard cells. Guard cells are located around the stomatal pore and are responsible for opening and closing of the pore. The water uptake controls the opening of the stomata by the guard cells. It led to turgor pressure and an increase in the size of the guard cell. The causes of the stomata to open and allow the exchange of gases such as carbon dioxide and oxygen are exchanged between the plant and the atmosphere. The stomata's closure results from the water loss from the guard cells and a decrease in the turgor pressure.
This caused the guard cells to shrink, resulting in the stomata closing. Nucleus position and protein composition do not have any major effects on stomata closure and opening. Chlorophyll absorbs wavelength of the sunlight 68 UPC. Chlorophyll absorbs red and blue wavelength of the sun. Chlorophyll is a chemical photoreceptor that traps light for photosynthesis in plant. It absorbs light in the red long wavelength and blue short wavelength region of the visible spectrum. Green light is not absorbed but reflected, making the plant green green appear green. Which of the following is not a correct match? Thick, hard with branching near base tree. Thick, hard with branching near base tree. Weak stem which cannot stand upright creeper सही है. Petiole attached leaf to stem सही है. More than one. Thick, hard with branching near base tree ये सही नहीं है. Yeah, petiole, a part of leaf attached leaf to the stem by leaf base. It also helps leaf to lead to light and allow them to flutter in wind. Creepers are plants with weak and soft stems that grow horizontally along the soil since they cannot stand upright. These are tall and big plants having one hard woody stem and the trunk bearing wood branches. Leaves. The twig always at the same distance from the ground, not near the base. Subs, on the other hand, are plants with woody stems, thick, hard, are branches of almost equal size arising from the stem, always above the soil near the base. Option B and C are correctly matched, while option A is not correctly matched. Water reaches great height in trees because of suction pull caused by absorption, transpiration, evaporation, more than one of the above. तो ये होगा transpiration से. Transpiration is a process that involves loss of water vapor through the stomata of the plant. The loss of water vapor from the plant cools the plant down when the weather is very hot and water from the stem and roots move upward or is pulled into the leaves. On the other hand, plants absorb water and minerals from the soil via their roots, but water does not move upward due to absorption. Similarly, water escapes tree through evaporation. Transpiration, the process by which plants lose water from leaves and stem through evaporation. Which among the following is a character of chloroplast? Makes them qualified to self-replication. Chloroplasts like mitochondria contain their own DNA. This DNA is inherited from their ancestor. A photosynthetic cyanobacterium that was engulfed by an eukaryotic cell. Chloroplast outer membrane granum. Lumen thalaccostoma in a chloroplast are found in green plants like and algae. They are the food produced of the plant. These are the found in the mesophyll cell located at the leaves of the plant. They contain a high concentration of chloroplasts like sunlight. This cell organism is not present in animal cell. Chloroplast has its own extra nuclear DNA and therefore are semi-autonomous like mitochondria. They also produce proteins and lipids required for the production of chloroplast membrane.
अभी बहुत क्वेश्चंस बचे हैं हमारे. The parts of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent are called as cartilage. In lichen, a chlorophyll containing partner lives together. Lichen में क्या होता है? मश फंगस और एल्गी रहता है ना. हाँ, एल्गी एंड फंगस. एल्गी एंड फंगस, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus living together. The fungus provides shelter, water and minerals to algae. In return, the algae provide food which is prepared through photosynthesis. Female Anopheles can be distinguished from female fluids because it sits at an angle with the substratum. एक एंगल पे बैठते हैं. Mosquito is a vector and transmit the diseases. Insect when fed on human blood transmit the pathogen. Anopheles transmits malaria, parasite. Culex transmit West Nile virus and Filaria nematodes. There are differences between female cluex and female anopheles in their feeding patterns, size, eggs, and habitat. Female anopheles body rests at an angle to the substratum. Cluex body rests parallel to the substratum. Anopheles mosquito make an angle its body at 45 degree from the surface. The most important cell type associated with the immunity of the body is lymphocyte cell type. लिम्फोसाइट के लिए होता है इम्यूनिटी. डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं. Lymphocyte is a white blood cells. WBC found in the blood and lymphatic system play a crucial role in adaptive or lymphocyte primarily lymphoid organ में पाए जाते हैं like spleen, lymph nodes and tonsil. They play a key role in initiating immune response against the foreign pathogens. All lymphocytes originate from stem cells in the bone marrow. B lymphocyte mature in the bone marrow. B lymphocyte bone marrow में mature होता है while T lymphocyte mature and the thymus. Upon exposure to the antigen, B and T lymphocyte differentiate into effector and memory cell. किसमें differentiate होता है? Effector and memory cells में. Lymphocytes are responsible for both humoral antibody mediated and cell mediated immune response. Red blood cells RBC are known as erythrocyte. RBC contains an iron rich protein called hemoglobin that gives blood its red color, जो लाल कलर देता है blood को उसका. RBC are the most copious blood cell produced in bone marrow. Their main function is to transport oxygen from and to various tissues and organs. Blood platelets are tiny blood cells that form clots over the injury and stop the bleeding. These blood cells are produced in the bone marrow and appear as small disc-shaped colorless fragments without a nucleus. The total number of platelets present in the blood usually varies between 1.5 lakh to 4.5 lakh per cubic millimeter in the healthy individual. तभी तो डेंगू होता है तो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट काफ़ी कम हो जाता है जो कि हेल्दी नहीं होता है. हेल्दी के लिए कितना होता है? 1.5 लाख से 4,50,000. कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा वाटर प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट से प्लेटलेट्स होता है जो पेरिफेरल ब्लड मॉलिक्यूलर सेल्स पी बी एम सी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होता है प्लस पेरिफेरल platelet blood peripheral blood molecular cells PBMCs lymphocyte and monocyte RBC cells plus polymorphonuclear cells eosinophils or neutrophils. 55% plasma, 1% platelet plus PBMCs or 45% RBC plus polymorphonuclear. Which one of the following statement is correct about muscles in the human body? Muscles work in pair. Muscles become shortest
Incorrect question. Muscles become shorter, stiffer, and thicker when contracted. Muscle can only push the bone. More than one of the तो muscle can only push the bone, ये गलत होगा. Muscle are part of human skeletal system. Myofiber form the muscles are parallel bundles of myofibers form this muscle. Muscle consists of various proteins such as actin, myosin, troponin, and tropomyosin. It helps in locomotion. Muscles can pull, not push. Muscle pull करता है, push नहीं करता है. It is because muscles contract with the help of protein, actin, and myosin. Muscles works in pair. Actin muscle हमेशा पेयर में वर्क करता है. वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर रिलैक्सेस, दस वर्किंग इन पेयर. एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, इसलिए वो हमेशा पेयर्स में काम करते हैं. मसल्स गेट शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड. जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल छोटा, टाइट और मोटा हो जाता है. द लेंथ ऑफ द शेयर कमर्स shortens while contracting. The length of sarcomere shortens while contracting. Muscles become longer and thinner while relaxing. Muscle जो होता है वो longer और thinner हो जाता है जब relax रहता है. और the length of sarcomere shortens while contracting. जब contract करता है तो छोटा हो जाता है. चलिए 68वीं बीपीएससी का भी सवाल ख़त्म हुआ. 67वीं बीपीएससी में आते हैं हम लोग, जो कि 67th बीपीएससी भी एग्ज़ाम के हैं. प्लानो कॉन्वेक्स, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है. मैग्नीफाइंग, और अब कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस देख लेते हैं. तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है व्हेन द रेज एंटर द कॉन्वेक्स लेंस द मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस रेज फोकस ऑन अ स्पेसिफिक focal point at the center of it. In cameras, most of the cameras there was. चलिए क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आंसर करते हैं. द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू मरकरी, आयरन, प्लेटिनम, निकल. तो प्लेटिनम पे पड़ता है पैरामैग्नेटिक. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. आंसर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सही है. The metallurgical process in which metal is obtained in a fused state is called melting. Fused state में होता है. Consider the following statement: addition to salt to pure water. Consider the following statement: addition of salt to pure water increases the boiling point of the water and decreases the freezing point of the water. अगर हम पानी में, प्योर वाटर में अगर नमक मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. ये कैसे? तो ये कहाँ से बीच में क्वेश्चन कर दिया है. अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है. और दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस. जब मिथाइल अल्कोहल वाटर में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो करेक्ट कौन सा है? तो दोनों ही करेक्ट है. एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. Uses of methyl alcohol is added to water, boiling point of water decreases is correct. Uses of methyl alcohol is used as solvent for paint. Which among the following are constituent of brass? Brass का constituent कौन है? वो जिंक और कॉपर है. Which of the among the following is the main constituent of biogas? तो मीथेन है बायोगैस का. तो which among the following would cause the bright red color due to rusting of black air?
सोडियम स्टॉन्सन से लाल कलर आता है। what are salt loving plant called? Salt loving halophytes. Halophyte are plant that can survive and near salty fruits. These plants in extremely salty condition. Halophytes are most usually found in coastal sharpness. कौन क्या एक्वाफॉर्टिस क्या है नाइट्रिक एसिड बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीच एंटी फॉर्मिंग ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडा क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है बोरेक्स इज सोडियम टेट्राबोरेट डिहाइड्रेट और सोडियम बोरेट Calomel is mercurous chloride, carborundum, silicon carbide, carbolic acid, phenol, hydroxybenzene, acetic acid, phenol, caustic potash, potassium hydroxide, sulfide, sodium nitrite, caustic soda, sodium hydroxide, potassium hydrogen tetrapotassium nitrate बहुत है what happens to the weight of iron when it rusts increase then decrease पहले में increase होगा फिर घटने लगेगा which among the following also known as white metal platinum white metal होता है क्या platinum industrially white metal it does not be alloyed for due to this its appearance as white नहीं बात है following statements with respect to the metals guys तो हम कल कंप्लीट करेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग 1.5 घंटे हो गए तो बंद करते हैं कल यहाँ से करेंगे 67th BPSC का कल करेंगे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गुड नाइट टेक केयर बाय बाय